Hello students, the question is an amount of ice of mass 10 raised to the power minus 3 kg and temperature minus 10 degrees Celsius is transformed to vapor of temperature 110 degrees Celsius by applying heat. The total amount of work required for this conversion is, now take specific heat of ice equals to 2100 joule per kg per Kelvin. Specific heat of water is equal to 4180 joule per kg per Kelvin. Specific heat of steam is equal to 1920 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of ice is equal to 3.35 into 10 power 5 joule per kg, and latent heat of steam is equal to 2.25 into 10 power 6 joule per kg. And the given options are option 1 3022 joules, option 2 3043 joules, option 3 3003 joules, and option 4 3024 joules. So the problem is based on the topic calorimetry, and in this particular problem we have to find out the total amount of work required. So the total amount of work required is basically used to give the heat for the conversion process, for the conversion of the ice at minus 10 degrees Celsius to the vapor of temperature 110 degrees Celsius. So there are intermediate transition here. For example, at minus 10 degrees Celsius, first of all, there is ice. So in the first process, this ice has to be converted up to 0 degrees Celsius. So 0 degrees Celsius. So it means that there is a temperature change, not a state change. So corresponding to this particular process, the heat provided is given by delta Q1 is equal to ms1 delta T, where m is the mass of the ice, which is 10 to the power minus 3 kgs, multiplied by S1. S1 is basically the specific heat of ice, which is given as 2100, multiplied by the temperature change. The temperature changes of 10 degrees Celsius, so here is 10. So after solving this, this value comes out to be 21 joules. Now the next conversion is 0 degrees Celsius ice to 0 degrees Celsius water. So this is a kind of a state change, not the temperature change. So in this particular process, we have to provide heat, which is stored, which is given by the part of the work which has to be done. So delta Q2 is equal to M L, for example, M L F, latent heat of fusion. So latent heat of fusion for ice we have to use here. So mass, first of all, mass is 10 raised to the power minus 3 kgs, and latent heat is given in the data, which is 3.35 into 10 raised to the power 5 joule per kg. It is given as. So after solving this, this value comes out to be 335 joules. So this is delta Q2. Now this 0 degree Celsius water has to be converted into 100 degree Celsius water. So there is a temperature change, not the state change. So the amount of heat which is required for this conversion is given by delta Q3. Delta Q3 is equal to M, the specific heat of water, then the temperature change. So this is given by the mass. The mass here is 10 raised to the power minus 3, and the specific heat of water is 4180, and this multiplied by the temperature change. So the temperature change is from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, so it means that 100. So putting all the values, we get this value as 418 joules. So this is delta Q3. Now the next conversion is from 100 degrees Celsius water to 100 degrees Celsius vapor. So 100 degrees Celsius water has to be converted into 100 degrees Celsius vapor. So this is a kind of a state change, not the temperature change. So let us call this heat, the required heat here is delta Q4. So delta Q4 is given by M into LV. So where M is the mass, which is 10 to the power minus 3 kg, and this is the latent heat of vaporization. So the latent heat of vaporization in this case is given as 2.25 into 10 raised to the power 6. This value is given in the problem. So after putting this value, we get the result as 2250 joules,
and the next conversion is from 100 degrees Celsius vapor to 100 degrees Celsius of 110 degrees Celsius of vapor or steam. So 110 degrees Celsius. So it means that there is a temperature change, not a state change. State is vapor here. So this is delta Q5. So delta Q5 is given by MSV delta T. After putting the values 10 to the power minus 3 for the mass, then SV is given as 1920 specific heat of steam, which is 1920 given in the problem, and delta T is the temperature change. So the temperature changes from 100 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. So this value is 10 here. After putting all these values and solving it, so we get this value as 19.2 joules. So these are the different heats required at the intermediate steps. So the total or the net heat provided in the process is the sum of all these heats. So delta Q net is basically the sum of all the heats. Q1 delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 and plus delta Q4 delta Q4 plus delta Q5. Putting all the values here, we get the result as nearly equal to 3043.2 joules, which is nearly equal to 3043 joules. So we can say that option 2 is correct here. यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, कैलोरीमेट्री टॉपिक से ली गई है. इसमें कहा गया है कि आइस जो है 10⁻³ kg आइस जो है ली गई है, जिसका टेम्परेचर इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाना है वेपर में, और उस वेपर का टेम्परेचर होना चाहिए 110 डिग्री सेल्सियस. तो इस प्रोसेस में कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी? तो इस प्रोसेस में जो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो बेसिकली यूज़ की जाएगी ताकि अलग अलग स्टेप्स में हीट प्रोवाइड की जा सके. वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी, वर्क जो है कन्वर्ट होगा इनटू द हीट, जो हमें इसमें पूरी अलग अलग स्टेप्स पे देनी होगी. सबसे पहले समझना होगा कि क्या क्या कन्वर्जन्स हो रहे हैं. तो इसमें कन्वर्जन सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस की आइस का कन्वर्जन हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में. तो यहाँ पे एक टेम्परेचर चेंज का जो है प्रोसेस हो रहा है और स्टेट चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे. तो हमने डेल्टा Q1 लिखा, MS1 डेल्टा T, वैल्यू पुट करी, मास की जो गिवन है 10⁻³ S हमने यहाँ पे लिया आइस के लिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100, और टेम्परेचर चेंज हुआ यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 पुट किया. सारी वैल्यूज पुट करी हमने, तो ये वैल्यू आई 21 जूल्स. उसके बाद हमने निकाला डेल्टा Q2, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस का कन्वर्जन हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, यानी कि एक स्टेट चेंज है, टेम्परेचर चेंज नहीं है. तो यहाँ पे लेटेंट हीट यूज़ की जाएगी. तो डेल्टा Q2 इक्वल्स टू M इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे अप्लाई की जाएगी. सो जो गिवन वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट की 3.35 इंटू 10⁻5, और मास की जगह हमने 10⁻³ पुट किया. तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आता है 335 जूल्स. फिर हमने निकाला वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो रहा है इंटू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर. तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे MS डेल्टा T फॉर्मूला लगेगा. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर चेंज है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का, और स्पेसिफिक हीट हम यहाँ पे लेंगे वाटर के लिए. मास जो है 10⁻³ ही रहेगा हर एक स्टेप में. सॉल्व किया ऐसे तो वैल्यू आती है 418 जूल्स. फिर उसके बाद हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्जन, उसके लिए हीट रिक्वायर्ड जो है वो निकाली. तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ की जाएगी स्टीम के लिए. तो डेल्टा Q4 बराबर हो जाएगा M इंटू LV. M की वैल्यू पुट करी, LV की वैल्यू पुट करी, 2.25 इंटू 10⁻6, तो ये वैल्यू निकल के आती है 2250 जूल्स. फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर का कन्वर्जन 110 डिग्री सेल्सियस वेपर में, उसमें हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करी. तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, स्टेट वेपर ही है. वैल्यूज पुट करी तो ये रिजल्ट हमारा आ रहा है 19.2 जूल्स. सारी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनमें अलग अलग जो हीट लग रही हैं उनको हमने सबको एडअप किया, और टोटल नेट हीट जो रिक्वायरमेंट है वो निकाला, और वही ये जो है हमारा वर्क डन जो है होगा. इस पूरे कन्वर्जन में जो वर्क डन हो रहा है वो हीट चेंज के बराबर होगा. जो वैल्यू निकल के आ रही है 3043.25 जूल्स. ये लगभग बराबर है आपका 3043 जूल्स, जो कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट है. So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.